Hello everyone, welcome to this class. आज आम यही क्लास रे 100 GK रो MCQ प्रैक्टिस करबा for your exam ARI AMIN SFS and ICDS supervisor रो main exam by. Question number 1 try करंतु. Which of the following is not a function of Reserve Bank of India RBI? निम्नोक्त मध्यरु केउटा एक RBI रो फंक्शन हेबो नाही. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो फंक्शन हेबो नाही. इश्यूइंग करेंसी ही परिबो, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन आल्सो ही परिबो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज. आई थिंक ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट लागुची. दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, आरबीआई आपनकर 1935 रे एस्टैब्लिश करा जायतिला एवं हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई आपन कमेंट सेक्शन रे जणांतु. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडिया's जीडीपी इन रिसेंट इयर्स? व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट करिछि मोस्ट टू इंडिया's जीडीपी? सर्विस सेक्टर अराउंड 55% आई थिंक. ठीक अछि, योगदान रही जीडीपी क्षेत्र सर्विस सेक्टर हम यार राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड्स फॉर? जीडीपी रो फुल फॉर्म कोन आसीबो? जीडीपी होची ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक अछि, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स? निम्नोक्त मध्यरु केउटा एक डायरेक्ट टैक्स अटे? इनकम टैक्स. इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स अटे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. यह को क्यों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाश करा जाए? यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा यह को प्रकाश करा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को. यार हेडक्वार्टर रही यूएनडीपी रो न्यूयॉर्क रे. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन्फ्लेशन रेफर्स टू. इन्फ्लेशन रो अर्थ कोन? इन्फ्लेशन रो अर्थ कोन? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी. इट मींस गुड्स रो वैल्यू बढ़ी जिवो और प्रोडक्ट जाउ कहा जाए किंतु मनी रो वैल्यूटा कमी जिवो. नेक्स्ट 7, which one of the following is included in the primary sector? agriculture आसीबो. एग्रीकल्चर गोटे प्राइमरी सेक्टर अटे. डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर मीन्स. पब्लिक सेक्टर रे डिसइन्वेस्टमेंट रो अर्थ कोन? सेलिंग शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. ओके, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर मीन्स सेलिंग शेयर्स ऑफ पब्लिक enterprises. Option B is your right answer. Next, the Make in India initiative was launched in 2014 मसीह. 2014 ठीक अछि. ऑप्शन बी 25 सितंबर 2014 मसीह यहाँ को लॉन्च करा जायतिला. नेक्स्ट, which committee recommended LPG? LPG means liberalization, privatization and globalization रिफॉर्म्स इन इंडिया. क्यों कमिटी एलपीजी को रेकमेंड करथिले? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नरसिम्हम कमिटी. नरसिम्हम कमिटी. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. हु इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? यूनियन एग्जीक्यूटिव रो हेड की अटंती? Who is the head of the Union Executive in India? Union Executive रो head होचंती President. Option B President होबो एहरा right answer. Next question, which article of the Constitution deals with abolition of untouchability? Abolition of untouchability एटा आपनकर केउ आर्टिकल रे मेंशन करा जाय छी? Abolition of untouchability article 17 of the Indian Constitution. Option C समस्त चूज करछंती. Next, the directive principles of state policy are borrowed from the constitution of DPSP को आयरलैंड रो constitution, Irish constitution रो
बरो करा जायछि which schedule of the constitution contains provisions related to पंचायत राज व्यवस्था संबंधी अनुसूची रोचे आपणकर भारतीय संविधान रो 11th शेड्यूल 11तम अनुसूची ऑप्शन सी हबो राइट आंसर द टर्म ऑफ द लोकसभा केते वर्ष 6 ईयर दैट इज रॉन्ग राज्यसभा रो 6 ईयर 5 इयर्स हबो राइट आंसर ओके नेक्स्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय भारतर उपराष्ट्रपति केमिति निर्वाचित होती बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द्वारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हु कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ ए स्टेट राज्यपाल को तांको पदवी रु बहिष्कार करि परिबे के करि परिबे इ क्षमता राष्ट्रपति को निकट रे रहिछि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज योर राइट आंसर द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू को बोरो करा जायछि यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन इज योर राइट आंसर ठीक अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच अमेंडमेंट एक्ट इज नोन फॉर द पंचायत राज सिस्टम केउ संविधान संशोधन नियम जरिया रे पंचायत राज व्यवस्था को गोटे रिफॉर्म आना जाइतला पंचायत राज सिस्टम को आना जाइतला 1992 रे आई थिंक 73rd हबो 73तम संविधान संशोधन ऑप्शन सी समस्त चूज करछंती 1992 मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली मनी बिल को इंट्रोड्यूस करा जाए ओनली लोकसभा रे ऑप्शन बी लोकसभा हेबो राइट आंसर हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर रो प्रतिष्ठाता किए थिले चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य इज योर राइट आंसर द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन केउ मसिया रे 1757 ठीक अछि 1757 रे बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाइतला काहा का मध्य रे सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लीड बाय रॉबर्ट क्लाइव एथरे किए परास्त होइतले सिराजुद्दौला परास्त होइतले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बेंगल रे परमानेंट सेटलमेंट को किए इंट्रोड्यूस करथिले बेंगल रे परमानेंट सेटलमेंट आई थिंक 1973 रे लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करथिले व्हिच इंडस वैली साइट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान हरपापा ऑप्शन सी हरपापा हैव राइट आंसर हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एही स्लोगन टी के दिखले स्वराज इज माय बर्थ राइट बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942 रे 1942 मसिया रे भारत छाड़ो आंदोलन को लॉन्च करा जाइतला द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रथम भारतीय महिला को कथा कहा जाउची सरोजिनी नायडू ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर हु कंपोज्ड द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को किए कंपोज करथिले किए रचना करथिले क्वेश्चन नंबर 28 हरिसेन जने कोर्ट पोएट थिले समुद्र गुप्तंकर कोर्ट रो जने कोर्ट पोएट थिले हरिसेन ओके हरिसेना हरिसेन तो नुह हरिसेना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 Which Mughal emperor built the Taj Mahal? केउ मुगल शासक ताजमहल को निर्माण करथिले शाहजहान इज योर राइट आंसर द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज हम्पी थिला विजयनगर एम्पायर रो राजधानी थिला हम्पी मन रखंतु नेक्स्ट व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया गंगा नदी होची लॉन्गेस्ट रिवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करिछि 8टी भारतीय राज्य जरिया रे कोन सेटा आपनकर गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा मन रखंतु नेक्स्ट व्हिच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड
वर्ल्ड रो लार्जेस्ट डेजर्ट निम्नोक्त मध्यरु कोनटा वर्ल्ड रो लार्जेस्ट डेजर्ट होची सहारा डेजर्ट ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रो कैपिटल होची पोर्ट ब्लेयर इज योर राइट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट Which Indian state has the longest coastline? Indian state होची गुजरात पाखरे सबुठारु अधिका उपकूलवर्ती अंचल रहिछि. Which is the highest peak in India? Options अनुसार कांचनजंगा आसीजिवो. कांचनजंगा highest peak in India. The black soil is most suitable for growing cotton ପାଇଁ black soil टा उपयुक्त अटे. The standard meridian of India passes through 82.5 degree east. Standard meridian pass करिछि. Right? Option B is your right answer. समस्त चूज करछन. Which river is known as the दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा भाबरे केउ नदी जणा जाय? गोदावरी नदी जणा जाय. River गोदावरी होबो right answer. Which Indian lake is the largest salt water lake? Which Indian lake is the largest salt water lake? होची चिलिका लेक टा ओडिसा रे लोकेटेड अटे. उल्लूर लेक तो रही J&K जम्मू काश्मीर रे सांबार आसो आपन राजस्थान देन पुलिकाट टा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तो आंध्र प्रदेश रे आसीजो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस आलोक संश्लेषण पई केउ गैस टा मुख्यतः दरकार कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन ब्रेन रो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन cerebellum cerebellum तो हबो medulla oblongata हबो ना cerebellum I think cerebellum option C is your right answer. Next what is the chemical symbol for sodium Na होची यार रासायनिक प्रतीक. Which vitamin is produced in the human body when exposed to sunlight हमर कोन कोची गोटे बॉडी रे कैटलिस्ट भाबरे काम करूची तो विटामिन डी को से सिंथेसाइज करूची. Next which planet is known as the red planet होची red planet Mars. Option C is your right answer. Next which acid is found in the stomach रे हमरो केउ एसिड रहिछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहिछि. ठीक अछि स्टमक रो गोटे पार्ट जेन छै म्यूकस अछि देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहिछि. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू साउंड और वैक्यूम जरिया रे ट्रैवल करि परिबो नाही. Option D is your right answer. Okay. Next question. Which device is used to measure temperature? Temperature को measure करिवा पई thermometer को यूज करा जाय. Option B thermometer होगा right answer. Which metal is liquid at room temperature? Room temperature रे केउ metal टा liquid state रे थाए. Room temperature रे mercury metal कोन थाए room temperature रे liquid state रे थाए mercury. Which organ purifies blood in the human body? Human body रे blood को purify करिवो. Blood को purify करिवा काम कहारो किडनी रो. ओके किडनी हो राइट आंसर. हार्ट रो काम कोन पंपिंग करेबो. The currency of Japan is yen. Option A is your right answer. Okay. Next jiba question number 52 try करंतु. Who wrote the national anthem of India? Anthem कथा कुआ गला ये लिखि जंदी नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को रचना करिसंती रविंद्रनाथ टैगोर. कुछ रविंद्रनाथ टैगोर. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? भूटान रो राजधानी निम्नोक्त मध्यरु केउटा? भूटान रो राजधानी होची थिम्फू हेबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक निम्नोक्त मध्यरु केउटा? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक होची उल्लर लेक J&K रे रहछि जम्मू एंड कश्मीर रे. who is known as the missile man of India? APJ अब्दुल कलाम. ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भाबरे जणा जानती. which sport is associated with Wimbledon सहित टेनिस जडित अटे. ऑप्शन सी टेनिस इज योर राइट आंसर. ओके which is the highest civilian award in India? कोन तो देखिबा
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया is भारत रत्न. Option D, भारत रत्न is your right answer. Where is the headquarters of the United Nations? UN ର headquarter କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? UN ର headquarter ରହିଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ରେ. Option C, New York is your right answer. Which Indian state is known as the Spice Garden of India? Spice Garden of India ହେଉଛି Spice Garden of India ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଟେ? Option B, କେରଳ. କେରଳ ହେଉଛି Spice Garden of India. Next, the first Indian satellite was आर्यभट्ट. आर्यभट्ट ହେଉଛି प्रथम भारतीय satellite अटे. ठीक अछि. How many players are there in a hockey team on field? On field रे तो 11 जन players रहिबे. Option C is your right answer. Who discovered penicillin? Penicillin को किए discover करथिले? Alexander Fleming. Alexander Fleming is your right answer. The headquarter of ISRO, Indian Space Resource Organization रो headquarter रहिछि बेंगालुरु रे. कर्नाटक रो बेंगालुरु. Option C is your right answer. ठीक अछि. Next, which is the national aquatic animal of India? That is about Ganga River dolphin. Option B, that is Gangetic dolphin have your right answer. Next, who was the first woman prime minister of India? प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी. Option C is your right answer. Which is the largest continent by area? Area दृष्टि largest continent is एशिया टा. ठीक अछि, एशिया महादेश. Next, what is the national flower of India? National flower कौन? Lotus. Option C is your right answer. In which year did India become a republic? Republic कथा कहै छै 1950 रे. Which day is celebrated as World Environment Day? Try करंतु. Question number 69. World Environment Day भाबरे केउ दिन को पालन करा जाय? World Environment Day भाबरे केउ दिन को पालन करा जाय? 5th June, जून मास 5 तारिख. Next, where is the Statue of Unity located? Statue of Unity आपनकर केउ राज्य रे रहिछि? गुजरात रे रहिछि. Statue of Unity. Which is the largest district in Odisha by area? क्षेत्रफल दृष्टि रू ओडिसा रो बृहत्तम जिल्ला होछि मयूरभंज जिल्ला. Option A हबो राइट आंसर. The Hirakud Dam is built on which river? महानदी उपरे Hirakud Dam को निर्माण करा जायछि. What is the official language of Odisha? Odia. Odia होछि official language. ठीक अछि. Question number 75 try करंतु. Who was the first chief minister of Odisha? Odisha रो प्रथम मुख्यमंत्री हरे कृष्ण महाताब. Option B is your right answer. हरे कृष्ण महाताब थिले ओडिसा रो प्रथम मुख्यमंत्री. ओके, नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 75 ट्राई करंतु. Which dance form in Odisha famous for Odissi? Odisha रो dance होची Odissi dance. Next, Similipala National Park is located in which district? Similipala National Park Mayurbhanj जिल्ला रे रहिछि. Option C have right answer. In which year was the Odisha state formed? Odisha राज्य 1936 1st April रे गठन होइतिला. Next, which place is famous for the छौ dance? छौ dance पई I think बरमपुर बारिपदा भद्रक संबलपुर. बारिपदा ही कहि परिबा. Option B, बारिपदा ठीक लागुछि. छौ dance. Okay, बारिपदा is your right answer. What is the state animal of Odisha? Sambal. Option C is your right answer. Who is known as the Utkala Gaurava? Utkala Gaurava भाबरे किए जणा जानथि? Utkala Gaurava Madhusudan Das. Option B have a right answer. Which district is famous for the Humor dance? Humor dance पई प्रसिद्ध जिल्ला होछि कलाहांडी. Option कलाहांडी और पुरी. कलाहांडी I think Humor dance. Next, question number 82. The Konark Sun Temple was built by याकु के निर्माण करथिले? नरसिंह देव. Option C is your right answer. Which is the only UNESCO World Heritage Site in Odisha? Odisha रो
गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होची सन टेम्पल एट कोणार्क इज योर राइट आंसर Where is the रुकुणा रथ यात्रा सेलिब्रेटेड रथ यात्रा जानिछन्ति पुरी रे हुए बट रुकुणा रथ यात्राटा भुवनेश्वर रे हुए ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर भुवनेश्वर ठीक अछि नेक्स्ट which river flows through the city of कटक महानदी ना ओडिसा रो बड़ नदी महानदी ओडिशा shares its boundary with how many state देखो चारोटी हबो because तेलंगाना को जदि कंसीडर करा जाए देन पांचटी बट दैट इज नेग्लिजिबल सेति पे हमें चारोटी ही यूज करबा चिलिका लेक इज फेमस फॉर व्हिच स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन चिलिका लेक रे आपण केउ प्रजाति रो डॉल्फिन देखिया पय पाइबे इरावाडी डॉल्फिन देखिया पय पाइबे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सीट्स 147 देन 10 टी रही राज्यसभा रे एवं 21 रही लोकसभा रे मन रखंतु ओडिशा रो ओके व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट हैज नो रेलवे कनेक्टिविटी एज ऑफ रिसेंट डेट व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट हैज नो रेलवे कनेक्टिविटी मालकानगिरी गजपति बौद्ध नुआपड़ा मालकानगिरी ही परिबो बोधे मालकानगिरी ऑप्शन ए मालकानगिरी कहि परिबा ठीक अछि तो क्वेश्चन नंबर 89 आपण टिके जणेबे एटा कमेंट सेक्शन रे मालकानगिरी हबो और बौद्ध हबो तो बौद्ध मालकानगिरी ही ठीक लागुछि ओके टिके जणाते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 वेयर इज द ओडिशा स्टेट म्यूजियम लोकेटेड भुवनेश्वर रे ओडिशा स्टेट म्यूजियम लोकेटेड अटे व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार भाबरे केउ प्लैनेट जाना जाय अभिनस ऑप्शन बी अभिनस इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Who was the first Indian to win an individual Olympic gold medal? प्रथम भारतीय जी की इंडिविजुअली ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतछन्ती अभिनव बिंद्रा इज योर राइट आंसर ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर द फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया को से लिखिथिले Which gas is most abundant in the earth atmosphere रे अधिक परिमाण रथिबा गैस रहउची नाइट्रोजन गैस ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर Who was the first woman governor of an Indian state I think उत्तर प्रदेश रो सुचिता कृपालिनी सरोजिनी नायडू ऑप्शन ए चूज करंतु सरोजिनी नायडू इज योर राइट आंसर Which state has the largest number of Lok Sabha seats उत्तर प्रदेश रे रही लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा रे आपनकर बारंबार आसे ओके व्हिच ऑप्शन हबो ट्राई करंतु जेनेवा स्विट्जरलैंड रो जेनेवा हबो राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज आल्सो कॉल्ड पंजाब केसरी भाबरे के जाना जानती लाल लाजपत राय ठीक अछि ऑप्शन ए लाल लाजपत राय होचंती पंजाब केसरी भाबरे जाना जानती व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए रे वर्णना करा जायछि राइट टू एजुकेशन नेक्स्ट व्हिच मोगल एम्परर वाज नोन एज जिंदा पीर जाको लिविंग सेंट कहा जाए ऑप्शन सी औरंगजेब हबो राइट आंसर क्लियर तो यह थिला आपनकर मेन एग्जाम पई किछि इंपोर्टेंट 100 जीके रो एमसीक्यू आउट ऑफ 100 आपनकर स्कोर केते रहउछि आपन कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे एवं आपन हेरो पीडीएफ नोटटी एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे एंड आपन गोटे स्मॉल रिक्वेस्ट रहइबो क्लास टी को लाइक करंतु एंड बहु मात्रा रे शेयर करंतु आई होप ए क्लास टी आपन मनक पई बहुत यूजफुल हबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास